Hi everyone, and let's continue our Nest.js journey. So, ये custom provider I have already covered, but I got a feedback that I should provide more examples so that these concepts, because custom provider, dynamic module loading, async provider, value provider, class based provider, factory provider, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आई थिंक क्रिटिकल भी और इम्पोर्टेंट है. बाकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ठीक है, तो आई एम जस्ट रिकैपिंग दिस कस्टम प्रोवाइडर एंड प्रोवाइडर स्कोप, डायनेमिक मॉड्यूल लोडिंग, वो तो हमने कवर ही नहीं किया अभी. सो लाइक हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन डायनेमिक मॉड्यूल, दैट ऑल्सो वी विल कवर. So these are really very core and important aspects. So let's talk about custom provider. There are, we can create a custom provider in different ways. So पहली बात है, what is the why we create a custom provider? By default, you can see the cat controller cat service. This is how we create a register provider in the module. You create a cat module, उसमें cat controller डाला, cat service, cat factory और export में वो डाल दिया, right? So by default, this is the standard way of registering a service or a provider using cat service. Okay, then another is a class based provider, known class based provider, alias provider, factory provider और value provider. अब इनको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं, because all are doing the same thing. They are trying to register a provider using different means or different ways. Like here we are using provide use class, provide use value, and somewhere you will see provide use existing, provide use value. Somewhere you will be seeing कि हम टोकन कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं. तो वो एग्जांपल्स को थोड़ा इन डेप्थ में देखते हैं. दैट्स इट्स गोइंग टू बी फन. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टैंडर्ड प्रोवाइडर. कैट सर्विस ऐड कर दिया एंड दैट इज फाइन. देन वी हैव अ वैल्यू प्रोवाइडर और क्लास बेस्ड प्रोवाइडर. सो लेट्स टेक अ लुक ऑन टू दिस वन बाई वन. आई एक्चुअली पॉइंटेड आउट द एरोज कि भाई कौन सा क्या प्रोवाइडर है. ये नॉन क्लास बेस्ड प्रोवाइडर, जहाँ हमें क्लास क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग की वैल्यू. प्रोवाइड एंड यूज वैल्यू इज ऑल्सो कैन बी जस्ट अ सिंपल ऑब्जेक्ट एंड ऑल, दैट इज अ वैल्यू प्रोवाइडर. एलियास प्रोवाइडर, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली? when we are adding something in the provider, that means we are registering a provider so that Nest.js internally can create the object of it. Sometimes you wanted to actually mock the service, so you created a cat service, but I want to replace it with some mock version. So you can use provide and use class. I'm going to provide you the cat service, but my own class will replace the existing class. जैसे यहाँ पे कर रखा है provide and use value in the second example. So provide a use value, so cat service will be replaced by mock cat service. ठीक है. Similarly, we have alias provider and value provider. Value provider, that means you will be injecting these token based value provider like connection. Connection is actually a string token. अब इसकी वैल्यू क्या? It can be connection object, it can be database connection, right? So similarly we have alias. अब मुझे actually I already have one service, let's say logger service. मुझे इसका brand new instance बनाना है without using the existing instance. So I can provide you the alias logger service from the existing logger service. तो वो ही हो गया provide and use existing, that is alias provider. You are creating a new instance with a new name for that service. So we have a use class, use value, use factory, and the standard way of registering a provider. So these all are custom provider. One is a standard provider, बाकी हम जो भी कर रहे हैं provider, use class, provider, use value, use existing और a token based, these all are custom providers. तो अब इनको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. बट व्हाई डू वी नीड कस्टम प्रोवाइडर? जो मैंने बताया था, व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ हैविंग Nest.js इंस्टेंशिएटेड. अब Nest.js के लिए तो डिफॉल्ट वे ऑफ क्रिएटिंग सर्विस इंस्टेंस है, बट अगर आपको कस्टम इंस्टेंस बनाना है तो आप यूज क्लास, यूज वैल्यू, ये कस्टम प्रोवाइडर यूज करते हैं. यू वांट टू रीयूज द एग्जिस्टिंग क्लास इनटू सेकेंडरी डिपेंडेंसी, जो हमने यूज किया यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग. और यू वांट टू ओवरराइड अ क्लास, जस्ट लाइक हम टेस्ट केसेस में मेनली करते हैं. Nest.js में हम क्या करते हैं, एक सर्विस लिया मैंने कैट सर्विस. अब कैट सर्विस के एक्चुअल मेथड माइट बी टॉकिंग टू डेटाबेस, बट आई कैन प्रोवाइड अ मॉक वर्जन ऑफ दैट सर्विस that will be just using some mock object. So these are the different objects why we do it. Now let's try to understand it with example. तो यहाँ पे 4 examples I'm covering. There are 4 examples, part 1, part 2, 3, 4, 5, and all are talking about
द सेम कॉन्सेप्ट कस्टम प्रोवाइडर यूजिंग डिफरेंट वेरिएशंस। तो यहाँ पे मेरे पास एक सर्विस है, डेमो सर्विस, DI डेमो स्टोर, और ये DI डेमो मॉड्यूल है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर किया हुआ लाइन 11 देखो, DI डेमो स्टोर, this is how we register a service inside a provider, default way of doing it. So indirectly this line 11 is treated as a line 14। तो इसमें क्या किया हुआ, provide use store, use class, use store, ठीक है। I mean this is like a shorthand syntax, you don't need to specify this for each and every service. Indirectly let's just treat it like this, okay, I'm going to provide you the use store service using this particular use store class. So a token हो गया, use store is a token which you can inject anywhere in any other service controller. So that is the part one, the standard way of registering a provider. Okay, then there are other ways, like here we create a DID store, DI demo store, you can comment this, and then this is how also you can write. Both are like same thing, both are representing the same thing. Now how you do it, you register it, and now you can actually use this inside a service also. So here you can see this is the constructor, and you can private read only DI demo store, and you can call this particular method. Okay, so this is a standard way of doing it. Now I need to fix couple of things because this is the project. I have fixed some build errors, nothing much. And here you can see now DI demo store is injected inside a controller, inside a service or any other service, and I can see. अब देखो इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल में, इफ़ यू वांट टू डू इट और बाय योरसेल्फ, पार्ट 1 2 3 4 आर एक्सपोजिंग अ ऐप मॉड्यूल, एंड दैट ऐप मॉड्यूल आई एम यूजिंग इन द ऐप सर्विस, ठीक है। तो इन फर्स्ट आई विल बी यूजिंग पार्ट 1 कंटेंट, देन पार्ट 2 कंटेंट, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ओके, बिकॉज वी आर नॉट इम्पोर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर जस्ट डिफाइनिंग द डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनसाइड अ यूजर कंट्रोलर। नाउ यूजर कंट्रोलर इज अ पार्ट ऑफ ऐप मॉड्यूल, तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे सर्विस, एंड दिस इज ऐप सर्विस, एंड ऐप सर्विस ऑलरेडी हैज दैट मेथड एंड विच वी कैन कॉल डायरेक्टली हियर, दिस डॉट service dot get hello, and if you see this dot service dot get hello, that is calling the service. Now if you see, every time when you click on it, I mean these are the standard provider and has a singleton scope, तो आप चाहे कितनी बार भी क्लिक करो, इट विल मैनेज ओनली सिंगल इंस्टेंस। ये डिटेल में हम स्कोप्स में बात करेंगे, प्रोवाइडर स्कोप, बट यहाँ पे हम बात करें हाउ यू क्रिएट अ, हाउ यू रजिस्टर अ स्टैंडर्ड प्रोवाइडर, दैट इज ऑब्वियसली will have a singleton scope if you are not specifying scope there, ठीक है। now let's take a look on part 2। part 2 में हम another way of registering a service provider देखते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल है, देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या किया मैंने, आई एम प्रोवाइडिंग अ स्ट्रिंग टोकन स्टोर, एंड द वैल्यू इज द यूज स्टोर क्लास, एंड हियर सेम इज द डेटा स्टोर इंजेक्शन टोकन, और use class a person store. I mean both are the like injectable services here, and I'm injecting these. So to inject these things, now there is a variation. We cannot just write private read only service or service name. Here we have to inject the string token. तो उसके लिए हमें @inject store provide store use store inject or the token name data store inject token or private person store. I mean this is just another way of creating a dependency injection. यहाँ पे हमने प्रोवाइडर रजिस्टर किया स्टोर के नेम से, तो स्टोर के नेम से ही आप इंजेक्ट करोगे उसको। तो दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग बाय रजिस्टरिंग अ प्रोवाइडर्स इन डिफरेंट वे, ठीक है। सो इफ यू कैन सी दिस हियर inside our module, we are registering it in different possible way. So here we are providing a store string token, provide a data store inject token, and then using this use class. Okay, just a variation from the standard provider. अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में आई जस्ट चेंज द लॉजिक। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यूज एग्जिस्टिंग जो मैंने बताया था, यू कैन क्रिएट अ एलियास वर्जन ऑफ अ सर्विस with a different name using use existing. So I'm providing a person store which is just using the user store instance only, just a name is different. Okay, so you can see here is first of all line 10 user store already I registered as a standard provider, और line 13 पे provide person store. Person store is the alias you can say which is using the user store instance. तो जब आप indirectly इसको inject करते हो यहाँ पे
and try to call get store, it is going to call, I mean, both the lines, line number 8 and line number 10, both are using the user store instance, right? It is actually the line number 10 is will inject existing instance of user store. So at line number 14 or 16 जो आप कर रहे हो get store, it will be just calling the get store method of user store only. ठीक है? So this is like creating the alias or customizing the instance of your service. Part 4 is the same grouping of everything. You can see we are providing a token name is a store, use class is database store. When I'm injecting a store, that means I'm going to inject an instance of database store. When I'm injecting a user store, that means I'm going to inject an instance of person store. When I'm talking about token person store, that means I'm going to inject an instance of global store. हमेशा provide is just a token name. Use class represent the actual class to which the instance will represent. हम use provide में it just a token. यूज क्लास डिफाइंस की इंस्टेंस किस क्लास का बनना है जब ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगा किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर. तो दिस इज द एग्जांपल 4. और इसको हम कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करेंगे तो वी कैन जस्ट फॉलो द सेम पैटर्न. हियर यू कैन सी वी आर इंजेक्टिंग अ स्टोर, database store, user store and person store. Okay, now example 5. In example 5 there is an optional provider also. I mean we don't talk much about it in the custom providers. Optional provider का मतलब है कि अगर आपने मॉड्यूल में डिपेंडेंसी इंजेक्ट भी नहीं किया, लाइक import, you haven't imported the user module in the main module, still you can inject the user store in the controller. So you can see this is our app module. ठीक है? Inside this user module I haven't added a dependency injection of user store. जब भी हम सर्विस बनाते हैं तो we always put that service inside a providers array, so that this service can be used controller के अंदर और service के अंदर. But here I'm not specifying it. I mean Nest.js will complain if you are not specifying it here and trying to use it in the service. But if you have put @optional, then Nest.js will say because we are not providing the user store dependency, maybe it will complain, but it will not throw the exception. Okay, it will not error this out. So these are just a different way of doing it. In the next video, let's talk about the value provider. So we have like a class-based provider, non-class-based provider, factory provider, and a value provider.